अब हम पढ़ेंगे रामाकृष्ण मिशन के बारे में। तो रामाकृष्ण मिशन इज एक्चुअली अ सोशल सर्विस and a charitable society which was founded by Swami Vivekananda in 1897 at Belur in Calcutta with the objective to carry on the humanitarian work, humanitarian relief and social work. तो बेसिकली एक सोसाइटी थी जिसने जोर दिया सोशल वर्क को और इसने ये कहा कि नॉलेज विदाउट एक्शन इज नॉट अ रियल नॉलेज. He also founded Ramakrishna Math in 1897 with the objective of bringing in existence a band of dedicated monks to propagate the teachings of Ramakrishna Paramahamsa. Or Ramakrishna Paramahamsa was the religious guru of Swami Vivekananda. तो रामाकृष्ण परमहंसा का कहना यही है कि देयर आर सो मैनी वेज टू सैल्वेशन, और उन्होंने जो खुद की सैल्वेशन अचीव की दैट वाज थ्रू ट्रेडिशनल वे ऑफ रिनंसिएशन एंड मेडिटेशन. रामाकृष्ण परमहंसा जो है वो बिलीव करते हैं कि सर्विस ऑफ जीवा इज द वर्शिप ऑफ शिवा, यानी कि सर्विस ऑफ मैनकाइंड इज द वर्शिप ऑफ गॉड. इसी आइडिया को आगे पॉपुलराइज करते हैं नरेंद्र नाथ दत्ता, जो ओरिजिनल नेम था स्वामी विवेकानंदा का. स्वामी विवेकानंदा ने अटेंड की एक वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स which was held at Chicago in 1893 and raised the prestige of Hinduism in India very high there. He called for the blend of materialism of the West with the spiritualism of the East to create a perfect harmony and happiness in the whole mankind. तो इसके सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स and ideas क्या थे? He believed in equality of all religion and he believed that Ram, Christ and Allah are the different names of same God. Social action without which knowledge was useless. Social action पे इन्होंने जोर दिया कि जब तक एक आदमी सोशली हेल्प दूसरों को नहीं करेगा, जो उसके अंदर नॉलेज है दैट इज ऑल यूजलेस. जो उसने मेडिटेशन करके सैल्वेशन या कुछ अचीव की है वो दैट इज यूजलेस. ही कंडेम्ड कास्ट सिस्टम एंड रिचुअल्स एंड सेरेमनीज ऑफ हिंदू सोसाइटी एंड ही अर्ज्ड पीपल टू imbibe among themselves the spirit of liberty, equality and free thinking. तो स्वामी विवेकानंदा के बारे में ये था. He was also known as, his original name was Narendra Nath Datta and his religious guru was Ramakrishna Paramahamsa, and the mission which he established was actually to give practical shape to the ideas of Ramakrishna Paramahamsa. तो अब हम पढ़ेंगे आर्य समाज के बारे में. तो आर्य समाज was founded by Swami Dayanand Saraswati at Bombay in 1875 and he was influenced by Swami Birjananda of Mathura, and that's why he founded this Samaj. Arya Samaj, though founded in Mumbai, it became very powerful in Punjab. And it spread to other parts of India like UP, Gujarat and Rajasthan. ये कहा जाता है कि स्वामी दयानंद सारस्वती जो है वो he toured throughout India to preach his teachings. Its distinctive feature was Shuddhi movement. So what is Shuddhi movement? Shuddhi movement means conversion of those Hindus who has once converted to other religions willingly or forcibly, but now they are ready, they are willing to come to the back to the fold of Hinduism. इसको हम शुद्धि मूवमेंट बोलते हैं. तो इसके आइडियाज क्या क्या थे आर्य समाज के? आर्य समाज गेव कॉल बैक टू वेदास, और इनका ये मानना है कि वेदास आर इटर्नल एंड इनफैलिबल. ही वॉज अगेंस्ट आइडोलेट्री and rituals and priesthood of Hinduism. He attacked child marriage system, caste system
and encouraged intercaste marriage and Victory marriage. He demanded equal status for women in Indian society, in Hindu society. और caste system को कैसे इन्होंने he believed that caste system is based on occupation rather than birth. He believed in the Chaturvarna system of Vedas. Chaturvarna system of Vedas में क्या है कि one is not born as Brahman, Kshatriya, Vaishya or Shudra, but one becomes Brahman, Kshatriya, Vaishya or Shudra based on his or her occupation. एग्जाम में पूछा जाता है इनकी बुक्स के बारे में. 3 बुक्स इन्होंने लिखी. सत्यर्थ प्रकाश in Hindi, Vedya Bhash Bhumika, that is in Hindi as well as Sanskrit, and Vedya Bhash in Sanskrit. In 1892, a split occurred over the question of education, spread of education. 2 sections यहां पर बन गए. एक section को हम कहते हैं, one section was led by Shraddhananda and it was in favor of the ancient system of Hindu education, and it provided education only for boys. The other section, which was known as the college section, led by Lala Lajpat Rai, was in favor of English education system and education for both boys and girls. जो कॉलेज सेक्शन लेड बाय लाला लाजपत राय था, इन्होंने बहुत सारे DAV schools established किए for boys and girls, schools and colleges for boys and girls. DAV means Dayanand Anglo-Vedic schools, and the most important one being at Lahore. This Samaj fixed the marriageable age for boys at 25 and girls at 16 years. तो आर्य समाज में जो चीजें आपने याद रखनी है, एक है शुद्ध मूवमेंट, gave call back to the Vedas, and it believed in the philosophy of Chaturvarna system, which is based on Vedas. इनकी कुछ books important हैं, and the college section is again very very important for exams. अब हम बात करेंगे सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स की. तो अकाली मूवमेंट, इट वाज गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट एंड इट वाज ऑफशूट ऑफ द सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स. तो इसका मकसद क्या था? इट एम्स एट लिबरेटिंग गुरुद्वारा फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ करप्ट उदासी महंत्स. तो उदासी महंत्स यहाँ पर गुरुद्वारा को कंट्रोल करते थे, और यहाँ पर गुरुद्वारा एक का जो प्रीस्ट होता था उसकी पोस्ट जो है वो हेरिडिटरी थी. उदासी महंत से पावर एंजॉय करते थे, एंड दे आल्सो एंजॉयड द गवर्नमेंट पैट्रोनेज. और जब इनके खिलाफ एक मूवमेंट स्टार्ट हुई, अकालीज ने एक मूवमेंट स्टार्ट की 1921 में. कौन सी मूवमेंट थी वो? नॉन वायलेंट नॉन कॉपरेशन सत्याग्रह. नॉन कॉपरेशन सत्याग्रह जब लॉन्च किया इनके खिलाफ, तो गवर्नमेंट ट्राइड ईच एंड एवरी method to suppress them, but finally they had to bow before the common demand, and Gurdwara Act was passed in 1922. Gurdwara Act was passed, which gave the control of Gurdwaras to the Sikh masses. अब Gurdwaras का कंट्रोल कॉमन सिख masses के पास आ गया, and Gurdwara was to be administered by शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एज इट्स एपेक्स बॉडी. उसके बाद पारसीज रिफॉर्म मूवमेंट पढ़ेंगे हम. तो इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी रहनुमाई मजदयस्नान सभा, which was founded in 1851, and its aim was for regeneration of the social condition of Parsis and restoration of Zoroastrian religion in its original form. फिर एक बलशास्त्री जंभेकर, not Ambedkar, बलशास्त्री जंभेकर. He was the pioneer of social reform movements through journalism. वो जर्नलिज्म से सोशल रिफॉर्म्स लाना चाहता था. He attacked the Brahman orthodoxy
and he started a newspaper in 1832 known as Darpan, and he is known as the father of Marathi journalism. तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे those social reform movements which were based on caste and the Muslim social religious reform movements.